हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। कमेंट पूछा है गुरप्रीत सिंह ने और वो पूछते हैं कि सर बॉलीवुड में टैलेंट मायने रखता है या स्मार्टनेस। टैलेंट मैं हमेशा टैलेंट के बारे में कहता हूँ कि टैलेंट इज समथिंग दैट यू हैव नो कंट्रोल ओवर, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट टैलेंट इज़, बिकॉज बहुत सारे शब्द ऐसे मार्केट में हैं या लोगों के दिमाग में हैं जिसके एक्चुअल वर्ड्स के मतलब उनको नहीं पता है। वो वही सोचते हैं जो उन्होंने कहीं से सुना होता है, विच इज़ वाई द कन्फ्यूजन ऑकर्स, बिकॉज अलग अलग लोगों ने उस शब्द के अलग अलग मतलब सुने होते हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होता है। तो टैलेंट इज़ बेसिकली अ नेचुरल स्किल और एबिलिटी जो लोगों के अंदर होती है और उसके बेसिस पे वो चीज़ें करते हैं। सो इफ़ दे डेवलप इट बिकम्स अ स्किल एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन द टैलेंट, बिकॉज टैलेंट जो है आपका वो यू कैन नॉट एनहेंस इट, यू कैन नॉट हैव इट, इट इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू यू, यू आर born with it or you have it inbuilt in you, maybe because of the family thing, maybe because of the DNA, or maybe because of the whatever reasons it is there inside you. So talent cannot matter, ठीक है, because it is something that you have no control over, you cannot do anything about it. If you're talented you will move ahead, if you're not talented then you have to develop that certain skill, then you have to work harder than that person who has a natural ability and natural edge over you. So talent does not matter. If you are talented it's okay, if you are not you have to work hard. But what is smartness? Smartness is the ability to think quickly in difficult situations. It is the ability to being quick. So it has nothing to do with lessening down the hard work which most people think. उनको ऐसा लगता है कि स्मार्ट आदमी जो होता है वो काम ज़्यादा नहीं करता है, हार्ड वर्क नहीं करता है और वो ऐसे तरीके ढूंढ लेता है जिससे उसको वही काम कम टाइम में कर सके, पर ऐसा नहीं हो सकता. सी द रूल्स ऑफ एफिशिएंसी आर इफ देयर इज सम वर्क दैट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट देन इट विल रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ एफर्ट, and to do it perfectly you have to invest that much time into it, you have to invest that much practice into it. If you have to read a book then you have to read a book, there is no smart way of reading a book. If you have to make a film then you have to make a film and you have to go through the entire processes. There is no smart way of making a film that you can make a film by sitting at your home, you cannot do that. The smartest does not weak curtailing your hard work. The smartness means that you have this ability to take the decision quickly and be witty at the same time and be cunning, and you have the right words at the right occasion, and that can be enhanced when you move out, take more action, you meet more people, you gain more experience, you read a lot of books, you learn from others' experience, and that's how people become smart. Why do people say that someone is street smart? Why स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो रोड पे ज़्यादा रहा है, उसने लोगों से डील ज़्यादा किया है और लोगों से मिला ज़्यादा है, उसने मार्केट समझी है, जिसकी वजह से वो स्ट्रीट स्मार्ट है. उसको स्ट्रीट में क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज़ें पता होती हैं. पर एक लड़का जो कि बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में दिल्ली में करोड़पति खानदान में रहता है, सडनली ही डिसाइड्स ही वांट्स टू बिकम एन एक्टर एंड गोज टू मुंबई विदाउट एनी कनेक्शन, देन ही डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ दैट सिटी वर्क्स बिकॉज ही हैज़ नेवर बीन आउट ऑफ हिज होम. सो दैट्स व्हाट हिज स्मार्टनेस कैन नॉट वर्क, बिकॉज स्मार्टनेस इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. So do not think that smartness is something that you have it in you, talent is something that you can have. No, it is about hard work and you cannot cut the hard work. So do not get engaged. First of all, I would just like to tell you that do not get engaged in this debate of talent, smartness, hard work and all these things. The only person who wins in the end is the one who thinks he can win in the end. The only person who wins in the end is the person who makes in hard work. It does not mean you have to do everything perfectly. What matters is that you keep on doing things. जैसे मैं ये व्लॉग बनाता हूँ, they are not perfect vlogs. पीछे बैकग्राउंड भी ऐसा कोई ऐसा खास नहीं है. लोग मुझे अक्सर बोलते हैं तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो कमरे का बैकग्राउंड ऐसा करे, क्या करूँ भी मैं, बैकग्राउंड तो घर बदल दूँ पूरा अपना, तो नहीं कर सकते आप वो. सो दिस इज द बैकग्राउंड दैट आई हैव एंड दिस इज द लॉजिटेक वेबकैम दैट आई हैव, दिस इज द snowball mic that I have, and I use these things to the best of my abilities. I do not think whether someone will like it or someone will not like it. What matters to me is that I keep on doing things. There are times when I do not want to do it, but I keep on doing it. And that's and again, one of the most important things. If you want to do something, there will be times when you will feel lagged by it and you will feel that I don't want to do it, but keep on doing it. And that's how things will get better. Despite your interest in it, despite your passion interest, despite your you getting bored doing something, do not feel that way. If you want to become successful, you have to repeat the same process again and again. If you want to become successful, you have to work hard. There is no respite to that, there is no resort to that. You have to work hard. So
Do not run away from that. Do not seek these kind of debates where you ask whether talent is important or smartness is important. Both of the things are important. And both of the things, and one of the thing is not even in your hand. Talent is not even in your hand. You cannot do anything about it. It is just inbuilt. It is God given thing. You are either born with it or you are not born with it. So do not rely on luck. Do not rely on talent. You will develop talent if you work hard on it. You will develop luck if you keep taking actions, and you will become smart if you just move out more and meet a lot of more people and deal with them. Because initially you will look like a fool when you will speak. People will make fun of you. ऐसा कई बार होता है कि हम ग्रुप में कुछ बात करते हैं and people just don't listen to us, and even if they listen to us, there are some guys in every group जो बहुत अच्छा बोलते हैं और तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे. मतलब दोस्तों के साथ कॉलेज में नहीं होता है कि आपके से एक ग्रुप में 4-5 लड़के होते हैं, उसमें एक लड़का बहुत बकायत होता है, और जब आप कुछ भी बात करोगे वो पलट के ऐसा जवाब देगा कि आप पलट के उसको बोल नहीं पाते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी पंच लाइन लेके आता है, बहुत ही अच्छा कमबैक लाइन लेके आता है. सो वो चीज़ डेवलप करने पे, क्योंकि वो चीज़ वो बचपन से कर रहा है ना, और आपने अभी शुरू करी बकैती करनी, तो वो बकचोदी की जो ताकत है वो धीमे धीमे आती है. कुछ लोगों ने उसमें अपनी पूरी ज़िंदगी लगा रखी होती है, सो दे बिकम वेरी गुड एट बकचोदी, बट हर कोई नहीं कर सकता वो चीज़. सो आप अगर वो चीज़ करना चाहते हो तो आपको फेल होना पड़ेगा. आप ऐसे ग्रुप्स में खड़े हो, बेवकूफ़ी की बातें करो, एंड देन यू रियलाइज ओके दिस थिंग इज़ वर्किंग, दिस थिंग इज़ नॉट वर्किंग. बट इफ यू स्टार्ट अर्ली यू बिकम बेटर. But smartness is only about developing this particular skill of speaking, doing things in a smart way, and letting your mind work faster. And one of the smartest ways to make your mind work faster is never to indulge into the thought process, not in the philosophical process, because philosophical process does not give you any edge over others. It just gives you more restlessness. So इफ़ यू वांट टू मेक योर माइंड एक्सरसाइज, देन मेरे को लगता है कि आपको पजल सॉल्व करनी चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, आपको लोगों से मिलना चाहिए, आपको दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए. दैट्स व्हेन योर माइंड स्टार्ट्स टू वर्क, एंड दैट्स हाउ यू डेवलप योर माइंड. सो आई होप मैंने आपको इस सवाल का जवाब दे दिया होगा. आई होप कि सही जवाब दिया होगा. देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट आई होप कि मैंने आपको सही जवाब दे दिया होगा. अगर आपको लगता है कि मैंने सही जवाब दिया है, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डू शेयर माई व्लॉग इफ़ यू लाइक इट. और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.